सब्सक्राइब करें अफ्रीन मेहंदी डिजाइन चैनल को, दबाइए बेल आइकन लेटेस्ट मेहंदी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हे गाइस, वेलकम टू बैक, इट्स अनदर वीडियो। आज के वीडियो में हम सीखेंगे शेप की मदद से आप किस तरह पैटर्न बना सकते हैं। पूनम ने कमेंट किया था कि उन्हें शेप तो आते हैं लेकिन कहाँ और कैसे बनाना है वो समझ नहीं आता। पूनम, ये सिर्फ आपकी प्रॉब्लम नहीं है, जो भी मेहंदी सीख रहे हैं बिगिनर से उन्हें ये डिफ़िकल्टी होती ही है। वो इस वजह से होती है क्योंकि हम खुद से कभी मेहंदी लगाना ट्राई नहीं करते, बस इंटरनेट से मेहंदी डाउनलोड करते हैं और वही मेहंदी कॉपी कर लेते हैं। जिन्हें भी ये प्रॉब्लम हो रही है कि मेहंदी लगाते समय स्टेप याद नहीं आ रहे हैं, तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा मेहंदी की प्रैक्टिस करें और जब भी आप किसी को मेहंदी लगाएं तो ध्यान रखें कि खुद के माइंड से पैटर्न लगाने की कोशिश करें। अगर आप इंटरनेट से या मेहंदी बुक से मेहंदी लगा रहे हो तो आप वो पैटर्न को याद रखने की कोशिश करें, उसके बाद अप्लाई करें, उसे देख देख कर मेहंदी ना लगाएं। अगर आपके भी मेहंदी रिलेटेड कोई भी सवाल है तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। आपको ये डिज़ाइन की प्रैक्टिस करनी है। आप पहले ये डिज़ाइन स्केच बुक में ड्रॉ करें, उसके ऊपर ही आप मेहंदी के कौन से ड्रॉ करें। मेहंदी डिज़ाइन एक हफ्ते या एक महीने में सीखी नहीं जा सकती, उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। जितनी ज़्यादा आप मेहंदी की प्रैक्टिस करेंगे उतनी ही जल्दी आपकी मेहंदी में फिनिशिंग आएगी और मेहंदी लगाने की स्पीड बढ़ेगी। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। आप जो मेहंदी की प्रैक्टिस करते हैं उसके फ़ोटो आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और जो बाजू में बेल आइकन है उसे ज़रूर क्लिक करें ताकि आपको मेरी आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। और अगर आप Girlfriend, you gotta get it right. You gotta want it with all your might. Girlfriend, you gotta learn to fight. I know you're gonna be alright. You wanna make your way in this crazy world. Step up, girl, you got what it takes. They always say don't make waves. Don't you listen, no. You gotta speak up, speak up. You gotta dare and speak your mind. You gotta get loud,
You wanna make your way